Sir, Tell me something about yourself. well, sir, my name is Archit Katare. I am from Gwalior. I did my schooling from Gwalior and then my graduation from Bombay. And my hobbies are playing chess and playing table tennis, and also into fitness. Fitness. Into fitness means what? Can you elaborate on this? Sir, I like going to gym. Gym. Yes, and playing table tennis also for fitness. So are you very regular to gym? Sir, I was, but then I got back injury. Okay. Yeah, so I have recently started it again. Due to gym. Yes, sir. How much time were you spending for gym and table tennis? Per day? How much time were you spending for gym and table tennis daily? Sir, for gym, I spend about 1 to 1.5 hours per day. And table tennis, I just play with my father. Okay. Right. So any special reason for joining gym or just like a hobby? Sir, I was very thin in my college, so I wanted to gain weight. Okay. That's why I joined. Did it help you then? Yes. So you passed out in 2018. Yes, sir. So what you have been doing since then? Sir, I've been preparing since then for ESE and GATE. ESE and GATE. Yes. And I am able to see that you have been, gradually improving in this exam, right? Yes. 2019, you qualified prelims or you appeared at prelims? Appeared. Appeared, not qualified. No. 2020, you qualified prelims and written the mains. Yes, sir. Okay, and last year you appeared at interview. Yes, sir. 2022. Sir, this is not my latest DAF. I forgot to download my DAF for current ESE 2023 examination. Okay. So this is my DAF for ESE 2020 second examination. Okay. So last year I qualified ESE 2022. You were recommended. Yes, sir. What was the rank? 28. 28. Yes, sir. So then why are you willing to go again? Sir, to for rank improvement, for department upgradation. What is the department you have got right now? CWC. CWC. You've got your joining? Yes, sir. When? Last month. Last month. Yes. So any special reasons of not selecting that department, CWC? Sir, no particular reason. Just following the trend. Yes. In what trend? You can also set a trend, na? So, like before railways was removed, railways was the first choice, then CPWD, and then CS roads. So I'm just following that trend. Or any special reason for joining CES? Your priority one is CES, right? Yes, that is CPWD yes, basically. yes, sir. So again a trend or something? Trend, no particular special? reason. No particular reason. So for trend you are willing to prepare again. Yes, Right. So do you think you are going to get a better rank this time? Sir, if I can score better marks in interview, then I. What were your interview marks last year? Sir, last year 112 and before that 100. So. Before that 100. Yes, that is. So what was not going good? And you are scoring 100, 110. What was not going good with the interviews? So maybe I was not giving satisfactory answers and maybe lack of confidence. Lack of confidence. Yes. Have you worked on in this year? No, sir, not really. So what sort of questions you were not giving the correct answers? Sir, You told maybe you are not giving the right answers. yes, sir. Mostly on practical questions, I was not able to give proper answers. Okay. So other than preparing again for prelims and mains, did you work upon special interview questions and all? No, sir. Okay. All right. Sir. Okay. Hi, Archit. Yeah, hello, sir. Archit, please tell me that you are saying that this DAF form is of earlier, last year. 2020 second. So that means in 2022 DAF form, you have written about the engineering services 2022. There is a column, details of the examination that is held by UPSC and you have appeared. Yes, sir. That means when you go that time, so you have written that 2022 you have selected an interview. For current one. नहीं, ये डैफ आपका लास्ट टाइम का है. हाँ, last तो year. लास्ट टाइम मतलब आपने ये लिखा था कि 2022 में आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए हैं. हाँ, ये आपने लास्ट टाइम लिखा था वहाँ पर. हाँ, DAF. आई गेस दैट इज नॉट करेक्ट ना, बिकॉज यू अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट पता है कि आप इंटरव्यू में हैं. Yes. Well, this time you have written again for 2023. No. This time you have not written, but last time you have written. Yes, sir. That is the mistake, Wrong. na? That is wrong. Okay, so let's start. Archit, suppose there is a tapered bar. Yes, sir. Diameter one side is D1 and it is uniformly decreasing to diameter D2 at the other end. Yes, sir.
length is L, Young's modulus is E, and we are applying a P pull. Yes, sir. So what will be the axial deformation? So PL upon pi by 4 d1 d2 into E. Correct. Okay, my aim is not to ask the formula, but still. Now tell me, if that is a cone, Cone so one side diameter will be 0. 0. Yes. Okay, D1 here and it is D2 is 0. Yes. You are applying P pull. Yes. Now what will be the deformation? Sir, theoretically, if we put in the formula, then it will be infinite. Infinite. Yes. But practically, if you apply P pull, will the deformation is infinite of cone? No. So where is that mistake? Sir. Because that formula is also not empirical, that is derivable. Yes, sir. So answer should be matching with the practical things also. So So, why it is not infinite? so because diameter, why it is not infinite? Why it is not, theoretically answer is coming infinite. Yes, sir. But you apply the P in a cone, it doesn't elongate by infinite length, na? So what is garbad here? Sir, I think diameter 0 is the issue because at a point, pressure will be infinite because of that load. So, Okay. Okay. Because diameter D2 0 is not practically possible. If it is 0, then where we are applying load? yes, sir. If we are applying P load, that means there is some. Stress will be infinite at that point. Yes. Archit, longitudinal friction in highway is 0.35 to 0.4. Yes, sir. Lateral is 0.15. why there is difference in lateral direction? Sir, I'm not aware. Okay. Phi index is greater than W index. Pardon me, sir? Phi index is greater than W index. Yes, sir. Why? Why phi index is greater than W index? Sir, I don't know. Okay. There are in surveying we apply correction due to temperature, pull, sag, misalignment and all. So we apply how many corrections in chain surveying? Total types of correction. In chain surveying, chain where we are using chain, not tape. Chain. In chain we are applying two correction due to slope and standardization. And Yes. in tape, The correction due to length, measurement length, and correction due to elevation, MSL elevation, and sag correction due to temperature correction, due to pull. yes. So there are more corrections in tape. Yes. To be precise, there are 7 corrections in tape Yes, sir. and 2 in chain. तो ऐसा भेदभाव क्यों? Why 7 corrections in tape and only 2 in chain? Because temperature is also affecting chain also, but we are not applying the temperature correction in chain. Pull is also affecting the length of chain, but we are not applying correction due to pull in chain. So why only 2 corrections in chain and 7 in tape? Sorry, sir, I'm not aware. Okay, no problem. Archit, suppose there is a simply supported beam Yes, sir. loaded with UDL. Okay, Yes, sir. downward UDL. Yes, sir. At leftmost support and cross section is rectangular. At left sir. Simple question. Simply supported rectangular cross section loaded with the downward UDL. Yes. At left support at the top fiber of rectangular cross section. At left at the top fiber. Bending stress will be compression or tension. At the left support. Bending stress. Will be compression or tension at the top point. It will be 0 Why? because bending moment is 0 at that point. Okay. If moment of inertia of a body is more, suppose moment of inertia of this glass is more and moment of inertia of this bottle is less. Yes. So, what we can interpret from this? Sir, if it is in motion, then it will be easier to stop the one which have low moment of inertia. Okay, correct. What is the difference between altitude and elevation? Sir, I think altitude is measured from sea level and elevation from ground level. Elevation from any datum. From it, okay. Okay. Do you know the Cosen-Karman equation in soil mechanics for finding the permeability? It's a formula for that. Sir, I can try if you Leave. I don't want empirical formula. I'm just asking if void ratio is more according to that formula, Yes, sir. permeability will be more or less? So permeability will increase. Increase because So K is E- proportional to EQ. EQ upon 1 plus. So it will be more. Yes, sir.
Now my actual question is coming. I have nothing to do with formula and empirical and all. Yes, sir. E is more, void ratio is more, permeability is more. Yes, sir. Now void ratio of fine grain soil will be more or coarse grain soil? What do you have? Fine. Void ratio of fine grain soil will be more or coarse grain soil? Yes, yes. So porosity is more in fine grain. So if porosity is more, then Void ratio is also more in fine grain soil. void ratio is more. More in fine grain soil. But permeability in fine grain soil will be more or less? Sir, it is less. It is less. But according to that formula, it should be more? Yes, sir. Because K proportional to E cube. Yes, sir. So, Sir, where is sir, it is the also fault here? Sir, it is also proportional to diameter, specific diameter of the. Okay, because that formula, if I am saying it is more with E, then all other terms are constant. Yes, sir. If we are comparing to fine grain soil, then having more void ratio, it will be more permeable. Yes. Okay, so we cannot compare that formula when fine and coarse both are there. And then Yes, we sir. have to take other factors Diameter, also, na? diameter, Diameter yes, also. yes, sir. Specific surface area will be more in clay or sand? Specific surface area, that is Specific surface surface area area. per unit volume. Surface area per unit volume. Sir, that will be proportional to 1 upon D. So for clay it will be more. Because diameter For clay is, it will be more. yes, diameter is less for clay. Okay. Now Archit, my last question to you, that suppose at a point which is below the water table, effective stress is 100 kilopascal. Yes, sir. We suddenly applied a load of 20 kilopascal. What will be the effective stress just after application of load? Sir, is the soil completely submerged? Completely saturated. So what will be the effect of? What will be the effective stress? Initially effective stress is 100 kilopascal Yes, sir. and we applied a load of 20 kilopascal. So just after application of load, Sir, it will be same. it will be same. Yes, sir. Because Correct. pore water pressure will be increased due to sudden application of load. Okay, correct. Okay, sir. So Archit, what is the difference between centripetal and centrifugal forces? Centripetal, Yes, sir. centrifugal forces. So centrifugal force is directed outside and centripetal is directed inside. So both are acting onto a body at one instant. Yes, sir. So then how body will be coming in the circular motion? Sir, I'm not aware. Okay, what about core? Core or kern in column? Core of? In column chapter, strength of material, what Yes. is core or kern or kernel? Sir, if the application of load is in the kern of column, then the stresses will be completely compressive. It is compression load. If it is compressive load. Okay, so why we don't want any tension in the column? Why we don't want any So because, tension? due to its brittleness. Because of its brittleness. Okay, so what do you understand by Young's modulus? Young's modulus of elasticity. Yes, sir. What is that? Sir, it is resistance to deformation Resistance to deformation. due to some application of load. Okay, what is the difference between resilience and toughness? So theoretically, resilience is up to the point of proportionality, Okay, and toughness is up to the point of fracture. so if we compare a solid shaft and hollow shaft, which one is better? So hollow shaft is better. Always? So there are some conditions. Okay, under which condition hollow is better? So I'm not able to recall. Okay, no issues. Over to you. Hi Archit. Yes, sir. So you had done your graduation in 2018 and you joined the organization in 2022. Yes, sir. What did you do in the gap? Sir, I was preparing for ESE and GATE. Engineering services and GATE. And GATE, yes, sir. You did not appear for the placement through IIT. No, sir. Why?
So my CGPA was less, Okay. so I thought it will be tough to get shortlisted for the companies, so I did not apply. You thought, or you did not get a chance to appear, or what? What was the exact reason? Sir, I tried to give the exams, but because of CGPA, I was not able to get shortlisted. So after a point, I stopped trying. Okay. Is there any CGPA criteria to appear for the? Because there might be a lot of companies, and everybody is asking for Not everybody, but mostly asks for CGPA criteria. Oh. Means they take some weightage of your CGPA. and based on that they select the candidates. Yes, All right. And you had been part of this powerlifting also. What Yes, is the sir. difference between powerlifting and weightlifting? Sir, in powerlifting, bench press, deadlift, and squats are considered. But in weightlifting, there are different forms. There are different exercise like snatch, clean and jerk. There are two exercises for weightlifting. They are not there in powerlifting. No, sir. Okay. In table tennis, have you heard the term drop shot? No, sir. No. No, sir. In any of the game, have you heard the term drop shot? Sir, I don't follow any game. I don't follow any game. Only table tennis. I play table tennis. I don't follow it on. All right. So tell me, Archit, what is cavitation? Cavitation. Sir, due to low pressure, water bubbles are formed in the turbines of pumps, turbines. So for example, in siphon, when at the top point pressure is low, so bubbles are formed, and when it comes down, then they cause impact with the turbines, which damages the turbine. So that due to that that process is called cavitation. So how much low? Pressure is low means what? Below vapor pressure. Vapor pressure. What is vapor pressure? Sir, it is the pressure below which water evaporates. Water evaporates. Not evaporates. What is the vapor pressure of water? 2.5 meter, if I'm not wrong, 2.5 meter. of water. Yes, sir. Vapor pressure of water is 2.5 meter. Is it a constant parameter or it depends on anything? Sir, it depends on the conditions. What type of conditions? Atmospheric conditions and elevation from the ground. For example, if you are at high altitude, then it is easy to boil water there. So their vapor pressure must be less. It is less. As the altitude increases, vapor pressure decreases. Vapor pressure decreases. Yes, sir. Why? Does it directly depend on altitude or something else? It means you are saying at the sea level, vapor pressure cannot change. It depends only on altitude. Is it? Sir, it will depend also on the impurities which are in the water. Okay. If it is pure water, then the vapor pressure will remain constant. So it should remain constant as far as I know. Okay. Can you draw a curve between viscosity and temperature? How the viscosity varies with temperature? So for fluid or gas? For both. For both. Can you draw the curve? Sir, about curvature I'm not sure, but I know that for water, viscosity decreases with increasing temperature, and for gases, viscosity increases with temperature. Why with gases it is having a different behavior and for liquids it is having a different behavior? Sir, I'm not aware of. Idea.
Does viscosity depends on density? I'm not sure, sir. Not sure. All right. अच्छा, आप बताइए आपको कैसे लगा? आपने पहले भी इंटरव्यूज दिए हैं, हाँ। तो आपके अकॉर्डिंग आपका परफॉर्मेंस कैसा था पहले वो जाने? एवरेज से बिलो ही लगा मुझे, बिलो एवरेज। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इम्प्रूव करने का नीड है, मे बी इंटरनली और कॉन्फिडेंट, बट वो झलक नहीं रहा है चेहरे पे, राइट? एंड कुछ जगह मुझे ऐसा लगा, मतलब सर लोग और बताएंगे टेक्निकल एरिया में, मैं प्रॉपरली सिविल से नहीं हूँ, बट हाँ स्टिल व्हेन यू आर ट्राइंग टू गिव सम ऑफ द आंसर्स टू द कॉन्सेप्ट्स यू डोंट नो, है ना, तो वहाँ पे आप चाहो कोई एक और दो ऐसे क्वेश्चन है आप उसको अवॉइड कर सकते हो, यू कैन से सर आई एम नॉट अवेयर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। कोई चीज़ आपको नहीं आती और उसमें अगर आप चले गए अननेसेसरी जस्ट टू शो ईच ऑफ स्किल, जरूरी नहीं कि आप हर क्वेश्चन का आंसर दे पाओ, ऑल इंडिया रैंक 1 भी नहीं दे पाएगा, बट आप उस एरिया में चले गए और वहाँ से क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनते गए और बनते गए, एक एक आपने टर्म यूज किया, आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट नहीं हो उस टॉपिक के बारे में, एक और नया टर्म पे एक और क्वेश्चन बनता जाएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप शायद वहीं पे फंस जाओ, ठीक है? हर एक मिनट कीमती है, मान के चलना 20-25 मिनट का एवरेज इंटरव्यू होता है, और वहीं पे अगर आपने 5-7 मिनट एक ऐसी जगह पे दे दिए जो आपका अंडर कॉन्फिडेंट जोन था, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है? तो एक और दो जोन से अगर आपको नहीं आते, आपको पता है बाकी आता है, बाय चांस वही जोन में आपको ले जा रहे हैं, तो यू कैन से सॉरी आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, कैन बी शिफ्टेड, इतना वो भी कॉन्फिडेंस से आप बोल सकते हो। ओके रचित, पेन लो, मैं जो बोलता हूँ लिखते जाओ, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ज़्यादा रुकूंगा नहीं मैं। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ना सेंट्रल वाटर कमीशन में? यस सर। पहला लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, पूरा लाइन नहीं। शूज़ आप एकदम लेस वाले लेना, ये वाले नहीं। नहीं मैं चेंज करूँगा, ये तो अभी ठीक है। ऐसे ही, हाँ। दूसरा, इंट्रोडक्शन में आपने बोला ग्रेजुएशन फ्रॉम बॉम्बे। बॉम्बे में एक ही कॉलेज है बीटेक का? कॉलेज स्पेसिफाई करने का। हाँ, ग्रेजुएशन फ्रॉम बॉम्बे, तो ऐसा लग रहा है कि बॉम्बे में एक ही कॉलेज है, वो भी तुम पता कर लो क्या नाम है उसका। नहीं सर, ये बाहर- अगर एक ही कॉलेज है तब भी आपको ग्रेजुएशन, मान लो कि सागर में एक ही कॉलेज है, तब भी आपको ग्रेजुएशन फ्रॉम सागर नहीं बोलना है, पूरा नाम लेना है। स्कूल ना? के लिए भी ऐसा जरूरी है? स्कूल के हाँ, लिए स्कूल के लिए भी आप नाम लीजिए। आपने लिखा ग्रेजुएशन फ्रॉम बॉम्बे, वो तो बिल्कुल दूर दूर तक कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है, ओके। है ना? ग्रेजुएशन फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, बेटर है कि एब्रिविएशन हम कम से कम यूज करें। ओके। फिर आपने जो अपना इंट्रोडक्शन दिया ना, उसमें आपने सिर्फ अपनी पढ़ाई का बोला, है ना, मतलब इंट्रोडक्शन में, लेकिन आप एकेडमिक के साथ साथ अपना फैमिली का भी बोल सकते हैं। डैफ में भी तो लिखवा है ना, सब इनकम, पोस्ट ऑफ फादर्स, सब बोल सकते हैं कि आई एम एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। आई वाज बोर्न हियर, और मेरा उसके बाद मैं चाइल्डहुड में यहाँ था, इट्स ओके। दूसरा, ब्लेजर का बटन आपका बंद है, करेक्ट, हाँ। लेकिन अगर आप इसको डिस्कम्फर्ट होते हैं तो वहाँ बंद रहना है, यहाँ पे आप ऊपर वाला बटन या दोनों बटन भी खोल सकते हैं, ऐसे भी कंफर्टेबल है तो चलेगा। नेक्स्ट, वो फॉलोइंग द ट्रेंड, तो आपने बोला, इसको मैं गलत जवाब तो कैसे कहूँ, मैं तो सोच नहीं पा रहा कि आपने इसको कैसे बोल दिया। एक आईआईटी का बच्चा जो आईआईटी जेईई में जिसका 1600-1800 रैंक है, गेट में जिसका 22 रैंक है, और जो सेंट्रल वाटर कमीशन में असिस्टेंट डायरेक्टर है, आईएएस एक बार क्लियर है, वो ऐसे कैसे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे बोल सकते हैं वो कि फॉलोइंग द ट्रेंड। आप एक आईएएस ऑफिसर ऑलरेडी हो, आप बन चुके हो एक बार, अब दोबारा अपना रैंक रिमूव कर रहे हो, फॉलोइंग द ट्रेंड आप कैसे बोल सकते हैं? सेटिस्फैक्टरी आंसर तो नहीं है। बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी तो नहीं है, तो Negative- अनसेटिस्फैक्टरी है, negative- जीरो भी नहीं कह सकता मैं इसको। फॉलोइंग द ट्रेंड आपको, और ये सवाल तो ऐसा है कि लोग कहते हैं कि डैफ को प्रिपेयर करो, करना है प्रिपेयर, इससे हो सकता है 10% क्वेश्चन आपसे पूछ ले, जो आपने इससे लिखा है, कोई हॉबी से पूछ लेगा, कोई इंटरेस्ट से पूछ लेगा, कोई सिटी से पूछ लेगा, पूछ सकता है। पर आपसे वाला क्वेश्चन कि आप क्यों इम्प्रूव करना चाह रहे हो, ये तो 70% चांस है वो पूछेगा, तो ये तो आपको बहुत ही अच्छा प्रिपेयर करना है। डैफ से भी ज्यादा चांसेस है। इवन एक फ्रेशर से भी ये पूछा जाता है कि आपका जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, या इनफैक्ट जो कभी कभी लास्ट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, उसके बारे में भी पूछा जाता है क्यों, है ना? तो अगर वो भी ये जवाब देंगे ना, जस्ट फॉलोइंग अ हाँ, ट्रेंड, वो तो नेगेटिव है सर। इसका आंसर अगर मैं ये दूं कि सीडब्ल्यूसी में इतना एग्जीक्यूशन का वर्क नहीं है, मोस्टली डिज़ाइन प्लानिंग का ही है, रिसर्च का है, और सीपीडब्ल्यूडी में फील्ड एक्सपीरियंस है ज़्यादा, मतलब प्रैक्टिकल उसमें मिलेगा। अगर आपने कुछ इस पे मतलब प्रोजेक्ट वगैरह पे वर्क किया हो, उसको रिलेट कर सकते हो, आपका कोई कुछ भी एक्सपर्टीज हो इसमें जो आप सीपीडब्ल्यूडी में लगा सकते अभी हो, तो सर ऐसा कुछ मतलब एक्सपीरियंस होता है, या अपना कोई इंटरेस्ट शो कर सकते हो समहाउ। सर वो इशू वो ये कि अभी जितना भी जॉब किया है कहीं भी नहीं, ज़्यादा एक्सपीरियंस। आपका वाला सही है, करेक्ट हो आप। सेंट्रल वाटर कमीशन में एकदम डिजाइन वाला जॉब है, ऑफिस का जॉब है। हाँ। आपके इससे ऊपर वाले प्रेफरेंस है एमईएस,
डिफेंस वाला हाँ। और हाईवे और Roads। सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस, और उसमें तीनों में ही आपका एग्जीक्यूशन का जॉब अच्छा खासा है। हाँ। तो ये बेस्ट आंसर है कि सर मेरे को एग्जीक्यूशन वाला चाहिए और सेंट्रल वाटर कमीशन में कभी एग्जीक्यूशन करना ही नहीं है, हाँ। वहाँ तो कमरे में बैठ के ही पावर पॉइंट में मीटिंग देनी है। Yes। सही है। दूसरा फॉलोइंग द ट्रेंड हो गया, शूज हो गया, ग्रेजुएशन फ्रॉम बॉम्बे गलत हो गया, बता दिया। लास्ट पॉइंट क्या है, सर ने पूछा रेजिलियंस और टफनेस में डिफरेंस बताओ। आपने आंसर दिया रेजिलियंस इज अप टू इलास्टिक, टफनेस इज अप टू फ्रैक्चर, ये आपके एग्जैक्ट वर्ड थे। तो जनरली जो बच्चा यहाँ तक पहुँच चुका होता है वो बोलता है कि रेजिलियंस अप टू द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिसिटी, और टफनेस इज एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर, ये बोलता है। फिर हम उसको इंप्रूव कराते हैं कि ये बोलने के साथ साथ ये भी बोलना है कि रेजिलियंस इज फॉर द स्प्रिंगिंग एक्शन, और फ्रैक्चर आपका कितना इम्पैक्ट एनर्जी आप ले सकते हो ये बोलना है। पर आपको तो आपने तो वो भी नहीं बोला कि एरिया अंडर, आपने कहा रेजिलियंस अप टू इलास्टिक, टफनेस अप टू फ्रैक्चर, बाकी आप लगा लो अपना। ये इशू है थोड़ा, मेरे को फ्रेम करने में थोड़ा इशू आता है आंसर। हाँ। मेरा इंटरव्यू में इसीलिए दोनों में मार्क्स कम रहे हैं। हाँ, रेजिलियंस इज अप टू, ऐसे जैसे टेलीग्राम लिख रहे हो ना, फादर विल कम सून। ठीक है, तो नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना, मे बी यू नो द कॉन्सेप्ट्स, मे बी क्या जानते ही होगे, 2 बार आप मेंस निकाल Frame चुके हो, करने बट में- वो झलक नहीं रहा ना, जब तक झलकेगा नहीं। पर्सनालिटी टेस्ट इज ऑल अबाउट दैट, यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव। Yes। ठीक है, तो आपको वो पूरा इलेबोरेट करके बोलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्स पूछे तो आपको एक्स प्लस वाई बताना है, पर एक्स तो पूरा बताना है ना। रेजिलियंस इज अप टू इलास्टिक, टफनेस अप टू फ्रैक्चर, ग्रेजुएशन फ्रॉम बॉम्बे, है ना। थोड़ा सा आई फील लाउड भी और थोड़ा सा हल्का, थोड़ा लाउड मतलब साउंड लाउड होना चाहिए थोड़ा सा। नहीं, Okay। गुड मॉर्निंग तो पूरा बोलोगे, मैं भी जीएम बोल दोगे आते ही गुड बोल के। आपको तो बोला था ना बड़ी हाँ, नहीं हमको तो बोला, उनको क्या पता ना बोलो। नहीं वहाँ नहीं बोला, वो तो ठीक बोलते है। हैं। पिछली बार आपका कितना रैंक था? 28 28। ठीक है, इस बार आपके एक बार मेरे को बताना प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं? 290 to 306 मैंने एस्टिमेट लगाया, मिनिमम 290 और मैक्स 306। ठीक है, 300। मेंस में मेंस में कितना अटेम्प्ट किया है? ऑलमोस्ट पूरा ही किया है, मतलब थ्योरी को काउंट करें नहीं करें पता नहीं। ठीक है, पूरा लिखा किया, लिखा मतलब तो है ऑलमोस्ट। पूरा किया है हाँ, तो ना, पूरा किया है। मेंस एक्सपेक्ट प्रीलिम्स में आपसे ज्यादा सिर्फ एक ही बच्चे के नंबर अभी तक, विनीत जैन के, जानते हो? नहीं, एक ही बच्चे नाम के, सुना है। मेरे पे सारे बच्चों के मार्क्स हैं लगभग 90% के। एक सुबह आपसे ज्यादा सिर्फ 2 या 3 बच्चों के मार्क्स होंगे, जिसको एक को मैं पर्सनली जानता हूँ, उसका इंटरव्यू हो गया कल। एक सुबह मिश्रा भी है जिसके गेट में फर्स्ट रैंक है शायद, उसके भी 320। हाँ, 2-3 बच्चों के हैं, हाँ। एक बच्चे का मैंने बता दिया, उसका इंटरव्यू कल हो गया विनीत जैन का। अच्छा, मेंस में मेंस में भी आप कह रहे हो कि अच्छा अटेम्प्ट है। 420 to 450 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस यही है कि आप इंटरव्यू तो आप इस स्टेज पे हो कि खराब भी दे दोगे तब भी 90 नंबर 100 नंबर तो मिलते ही हैं, तब भी आपको सिलेक्शन वापस सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन वही रैंक के लिए टॉप 10 चाहिए। हाँ, रैंक के लिए मतलब आपका प्रीलिम्स में आप टॉप 5 में होंगे इंडिया में, मेंस में भी आप टॉप उसमें होंगे, इंटरव्यू में अगर और अच्छा कर देते हो। इंटरव्यू कब है आपका? 22 को। 22 हाँ, अभी सितंबर अक्टूबर हम कुछ सोच रहे हैं। तो आप लगा लो। सितंबर। क्योंकि अक्टूबर में भी फेज 2 है। हाँ। ठीक है, तो प्रीलिम्स में आपके अच्छे है, मेंस में अच्छा है, इंटरव्यू में अगर अच्छा हो गया हाँ, तो हो सकता है कि अभी हम जो बात कर रहे हो आज के तारीख है 13 सितंबर, हो सकता है हम ऑल इंडिया रैंक 1 या 2 से बात कर रहे हो, पर आप ऑल इंडिया रैंक 1 या 2 से अभी हम बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि जो पॉइंट मैंने आपको बोले वो आप इंप्रूव करते हो कि नहीं करते। वो करते हो तो अभी हम ऑल इंडिया रैंक 1 या 2 से बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। आपको कोई डाउट? सर बट वही फ्रेम करने का इशू मुझे समझ में नहीं आता, उसको क्लियर कैसे करूँ? जो आंसर उसको फ्रेम करना है, क्या उसको प्रॉपर कैसे एक्सप्लेन करना जो है? जनरल आंसर है ना, जो जनरल क्वेश्चंस है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, उनको तो प्रिपेयर करो। वहाँ हर आंसर मतलब आप आप फ्रेम इस नहीं वे कर में सकते बोलो ना। कि आप किसी को एक्सप्लेन मतलब समझा रहे हो। अब मेरे को अगर पता है तो वैसे बात करो, जैसे अब तो दोस्त बैठे हैं तो मुझे ऐसे होता है। हाँ, इट इज नॉट लाइक दैट, आप ये समझो मुझे नहीं आता है और देन एक्सप्लेन लाइक दैट। उसमें ऐसा टाइम उसमें अगर टाइम ले तो कोई इशू तो नहीं है। एक्सप्लेनेशन अगर आपका सही जा रहा है तो कोई इशू नहीं है। और सर ने उन पॉइंट्स के बारे में बोला जो आपकी गलत नहीं थे, कंप्लीटनेस की बात हो रही है, हाँ। है ना? जो गलत था उसको छोड़ दो, जो आता है उसमें कंप्लीटनेस लाना है आपको। ओके, तो आप भी बोलते टाइम सोचो, भले स्लोली बोलो, लेकिन थिंक सोच- कि आप जो बोल सोच- रहे हो, हाँ, है ना, उससे इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? वो कंप्लीट है कि नहीं। ठीक है। वो भी थोड़ा सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा जब मैंने पूछा कि प्लेसमेंट में क्यों नहीं बैठे। हाँ। आपने कहा CGPA कम थी इसलिए नहीं बैठा। हाँ। तो आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे हो। सर तो उसके लिए क्या बेटर रहेगा बोलना कि प्लान नहीं था बैठने का? ये बोल सकते हैं क्या, मतलब 3.5 से मेरा था कि मेरे गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो उसके हाँ, या तो
मैं गवर्नमेंट जॉब में था। ये फादर का बताते, फादर गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको देख के मेरे बचपन से था कि गवर्नमेंट जॉब में हाँ, जाना इस है। तरह से बोल सकते हो, बट ये बताना कि 6.2 है तो नेगेटिव पॉइंट हाईलाइट नहीं करना हाँ? बेसिक, नेगेटिव पॉइंट हाईलाइट नहीं करना अपना। हाँ, हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट है। एक और बात, फादर गवर्नमेंट जॉब में है इससे जाना है, करेक्ट है, पर यहीं पे रुक जाओगे तो ये गलत हो जाएगा। फादर गवर्नमेंट जॉब में है, ये वही ट्रेंड जैसी बात ही हो मैंने जाएगी। वो लाइफस्टाइल देखी, मैंने वो जॉब सिक्योरिटी देखी, हाँ। मैंने देखा तो मुझे- मेरे को अच्छा लगा, तो हाँ, मैं इसलिए मैं choose हाँ, किया। सिर्फ फादर है गवर्नमेंट में इसलिए ऐसे नहीं, फिर आगे का बताना है। फिर वो बोलेंगे आपने फिर कॉलेज में सीट वेस्ट करी एक तरह से, आप फिर तो आपका उस कॉलेज में आने का कुछ पॉइंट नहीं। कॉलेज में आपको अपने सीखो अपने नहीं क्या? टेक्निकल चीजें टेक्निकल सीखिए, वो आप कॉलेज में आपको इम्प्लीमेंट कुछ नहीं, करेंगे। आपने कॉलेज से कुछ सीखा होगा ना? नहीं सीखा होगा वो तो मेरे को पता है, कोई नहीं सीखता, हाँ, कोई नहीं सीखता, कोई पर आप बोल नहीं सकते हाँ, ना, बोल आप- नहीं सकते, वही बात है ना। हाँ। तो जो भी आपने गेन किया, जो आप फ्रेम कर सकते हो वो आप फ्रेम वो यूटिलाइज करूंगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द थैंक यू, बेस्ट। थैंक यू।